Metabolic engineering in plants. Plants, they have been used as a source of diverse chemicals. ये प्लांट जो हैं वो बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनकी थेराप्यूटिक या मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो इसमें हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं बहुत सारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, और जो प्लांट का जो रेगुलर मैकेनिज्म है, जो रेगुलर ग्रोथ है या सेलुलर मैकेनिज्म्स हैं, उनमें ये वाइटल रोल प्ले करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, they are mainly non-essential for the vital activities of the plants, but even then they can perform some important functions, like they may attract the pollinators. कि कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि पोलिनेशन करते हैं, ये उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और समटाइम secondary metabolites, they can mediate to tolerate environmental stresses or different types of defense responses. In addition to that, variety of secondary metabolites, they are also having medicinal importance for human beings. तो इसमें बहुत सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो कोट की जा सकती हैं, like the caffeine, morphine, nicotine, cocaine. So these are variety of secondary metabolites that are also having medicinal importance to cure different type of diseases. So plants, they are very important because they have the ability to produce biopharmaceuticals. Although these secondary metabolites, they can be expressed in microbes like in bacteria and yeast. So genes can be cloned in these microorganisms. But as far as these secondary metabolites are concerned, they are more complex, having different type of complex metabolic pathways that may not be easy to manage by using microbe as the host organism. But fortunately now we have developed techniques by which we can culture plant cells in the laboratory. So plant cell lines can be established, and then these medicinally important phytochemicals, they can be expressed in plants. So here I can quote the examples of a few metabolites that are produced in plants, and they are very important to treat cancer. For example, here vinblastin and vincristin, they are important anti-cancer compounds that are produced by certain plants, like here Catharanthus roseus. So this is the plant that is the natural inhabitant of Madagascar. Madagascar एक country है, तो Catharanthus जो है ये वहाँ grow करता है, और nowadays some other countries have started its production. So the importance is that it is not only the medicinal plant but also can be used as an ornamental plant, कि सजावट के तौर पर भी इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये एंटी कैंसर ड्रग भी प्रोड्यूस करता है, जैसा कि मैंने दो कंपाउंड्स के नाम बताए। तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, एक्चुअली ये वाइल्ड टाइप प्लांट्स में एक्सप्रेस तो करते हैं, लेकिन इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बड़ी कम होती है, तो इसलिए हमें इसको हेक्टर्स ऑफ लैंड पे ग्रो करना पड़ता है। For example, if we grow Catharanthus on 1 hectare of land, so the commercial value of this drug, it may be 1 million, and the total production or the extraction of these anti-cancer drugs, it may be around 1 gram. But by using some gene manipulation technique, the pathway can be modified so that the huge quantities of these anti-cancer metabolites, they can be produced.